It's been more than 2.5 months since I've been out of house, just traveling. It's a mixed feeling right now that this trip is coming to an end. I've had so many nice and different experiences in this trip. हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम अजिता और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ऊपर यहाँ पे एक कार्ड ड्रॉप करा है तो उसको चेक करना टू नो मोर अबाउट मी। इस वीडियो में मैं आपको पूरे अपने साउथ इंडिया टूर के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताऊंगी, फ्रॉम the idea to planning to execution and also thanking people who helped me along the way. Before we get started, I'm really sorry मैं चैनल पे बहुत टाइम बाद आई हूँ एंड आई जस्ट कॉट अप इन सम पर्सनल वर्क एंड हो सकता है कि आगे भी फ्रीक्वेंसी ऐसी ऊपर नीचे रहे, बट आई विल ट्राई टू कम अप विद न्यू कंटेंट एज मच एज पॉसिबल। और अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो डोंट फॉरगेट टू चेक माई वेबसाइट, क्योंकि वहाँ पे मैं आई ट्राई टू बी मोर फ्रीक्वेंट देन हेयर। हाँ, तो कमिंग बैक टू साउथ इंडिया, तो मैं इस ईयर के मई में आई टूर्ड अराउंड 10 to 11 सिटीज ऑफ साउथ इंडिया। उस पूरे ट्रैवल सीरीज का लिंक मैं यहाँ भी ड्रॉप कर रही हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो वो जरूर चेक करना। तो चलो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। The first thing that I wanted to share with you was how the idea of touring South India alone came to my mind. तो जब ये ट्रिप स्टार्ट हुआ था उससे कुछ 1 महीना पहले मैं देहरादून में थी और 2 वीक्स में वहाँ रही और उसके इमीडिएटली 2 वीक्स बाद आई वेंट टू जयपुर। और उसके बाद जयपुर में बैठे बैठे मैं worldpackers.com एक वेबसाइट है, तो वर्ल्ड पैकर्स पे वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़ का लिस्टिंग होता है। So basically you can tour a place while contributing back to the society, generally in exchange for stay and meals. I will explain more about it in another video, but अभी वेबसाइट का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो एक बार खुद के लिए चेक करना। तो worldpackers.com पे मैंने देखा कि हैदराबाद में there was a hostel which needed help and I said okay cool। हैदराबाद गए भी काफ़ी टाइम हो गया because since I left my job in Hyderabad I never went back to the city and same hostel का ब्रांच एक मैसूर में भी था। So I thought कि चलो 2 weeks I'll stay in Hyderabad and 2 weeks in Mysore and उसके बाद प्लान करते हैं क्या करना है, कहाँ जाना है। I was just in Jaipur with no plan whatsoever what I'm going to do in next few days. तो हैदराबाद तो मैं पहुंच गई बट नथिंग वेंट अकॉर्डिंग टू द प्लान। हॉस्टल के साथ थोड़ा सा सेटिंग नहीं थी बेटा, सो आई हैड टू लीव हैदराबाद का हॉस्टल इन इवन लेस देन अ वीक। और मैसूर में भी आई ड्रॉप द आइडिया ऑफ स्टेइंग विद देम। अब मैं हैदराबाद में और मुझे कुछ आइडिया नहीं कि मुझे आगे क्या करना है। थैंक्स टू माय फ्रेंड सुचिता, शी ऑफर्ड कि तू भाई हॉस्टल में परेशान होने की जगह तू मेरे साथ ही रह ले बिफोर यू प्लान योर नेक्स्ट स्टेप्स। एंड आई सेड चलो ठीक है, कूल कूल कूल, सब सेट है। हैदराबाद के हॉस्टल में ही बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि यार मैं साउथ इंडिया आ ही गई हूँ, केरला घूमने का बहुत देर से मन है, तो यार पूरा साउथ घूम के फिर एक ही बार नॉर्थ जाएंगे। तभी मैंने एक रफ आइटिनरी बनाया कि हैदराबाद से मैसूर तो जा ही रहे हैं, उसके बाद पूरा नीचे नीचे घूमते रहेंगे। सो द प्लेसेस दैट आई सिलेक्टेड वर अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लेसेस आई वांटेड टू विजिट एंड द स्टॉप्स आई हैड टू मेक, ताकि 4-5 घंटे से ज़्यादा जर्नी ना हो। I was also looking for sponsorship or volunteering opportunity at these places to manage my expenses and stay within a strict budget. Initially जो rough itinerary बनाया था उसमें my friend Ankita, she kept giving her inputs. She was a guide throughout the trip. उसने South India काफ़ी सारा घुमा हुआ है, तो she kept telling me अजिता ये वाला जगह ज़रूर जाना, you can skip this place or you can add this city to your itinerary, और how to reach from one place to another. She was always there to help me. So thank you Ankita so much for your help. I didn't want to like stay in Hyderabad for very long जब तक आगे का प्लान नहीं होगा। Either I go on with my trip और वापस जाओ, फिर सोचो, प्लान करो। तो मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेरा जो रफ आइटिनरी है I'll try to follow that. Meanwhile I also kept reaching out to sponsors जो मेरा स्टे स्पॉन्सर कर सकते थे in the city. So I will also talk about this topic of how you can manage your expenses and use your skills in return for stay at different cities. तो अभी ये प्रोसेस चल ही रहा है, मैसूर का कुछ फाइनल नहीं है and I have to leave मैसूर the next night. तो मैसूर में जितने भी होटल्स हैं उनको I'm like मेल कर रही हूँ and finally on the night I had to leave from Mysore. Thanks to Mr. Manu from Skyway Tours. He responded to my mail and said, okay, I'm interested in your work and I would love to sponsor your stay. And I was like, wow, finally Mysore जा रही हूँ, जगह है रहने की, I don't have to go hunting for place. I was so glad कि last moment पे सब sort हो गया and I'm in the royal city of Mysore. The glistening lights of Mysore Palace will leave you spellbound.
and it was this city where I danced alone in the woods with no music. It's the first time ever I'm dancing in the woods and without music. And the beautiful weather and the clean and green roads of the city just took my heart away, and I could not have wanted more. Now around the same time when I was in Mysore, my friend Ankita, who I just mentioned before, was in Coorg and she offered me to visit her in Coorg before I went to my next stop. और फिर हम चले गए Coorg. Now Coorg is a perfect stop for nature lovers but is full of tourists all around the year, mainly because of its beautiful cool weather. Although it was rainy, but we managed to see all the beautiful spots the city had to offer, from gorgeous Abbey Falls to Raja's tomb surrounded by lush green gardens and amazing city views, to peaceful Namtoli Monastery and the lesser visited Harangi Dam. Apart from that, I was just happy that Ankita was there, and that is when my comfort with the camera improved. She kept pushing me to create better videos and put more energy. So thank you Ankita again so much for that. Coorg के बाद I moved down to Wayanad, and this was my first ever visit to Kerala, and I'd been waiting for it for the longest time, and I was so excited जैसे ही मेरा बस Kerala border center करा था. The landscapic views and the endless greens of Wayanad just took my breath away, and that is when I knew इसको God's own country क्यों कहते हैं. That's why it's called God's own land. Apart from that, my hosts in the city were super nice, and they provided me every comfort that I needed. I'm just glad पूरा time बहुत अच्छे से निकला. नीलगिरीज, बचपन से सुनते तो आए नीलगिरी की चाय, बट ऊटी पहुंच के मैं फाइनली इंट्रोड्यूस हुई है नीलगिरी हिल रेंज से. ऊटी पहुंच के जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ ना, आई बीन वेयरिंग लेयर्स ऑफ क्लोथ, बट ये गरम पकौड़े और चाय ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, एंड दे केप्ट मी वार्म एंड हैप्पी थ्रू आउट. अब ऊटी का ट्रिप काफ़ी ट्रोल ट्रिप था, क्योंकि जहाँ भी मैं जाती थी वो यहाँ बंद होती थी, यहाँ पे फ्लॉप शो होती थी. I don't highly recommend this place. So ट्रेन जा चुकी है, but I still enjoyed the city as much as I could and loved the people I met on my way. After a non-stop travel of 2 weeks, अब मुझे चाहिए था एक बड़े शहर का आराम. तभी मैं पहुंची कोयम्बतूर में. तो कोयम्बतूर का B&B पूरा घर जैसा था, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि ओ आई एम ट्रैवलिंग, ऐसा लगा कि मैं घर पे ही हूँ. अब बस मुझे शाही बच्चों की तरह आराम से बेड पे सोना था और अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर करना था. आई डिड नॉट वांट टू मूव अ सिंगल लिम्ब, बट उसके बावजूद आई मैनेज्ड टू सी सम ब्यूटीफुल प्लेसेस अराउंड द सिटी, एंड उसमें से मेरा फेवरेट था द वेरी जॉइंट एंड मैग्निफिसेंट लिंगा स्टैचू. तो मेरा नेक्स्ट स्टॉप था मन्नार, और कोयम्बतूर से मन्नार का कोई डायरेक्ट रूट नहीं है, एंड देयर इज नो डायरेक्ट बस और डायरेक्ट ट्रेन, तो आई हैड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट, एंड दैट इज व्हेन विष्णु, माय फ्रेंड फ्रॉम मुंबई, केम इन टू हेल्प, एंड ही आस्क्ड अ फ्यू पीपल ही न्यू जिनको पता था कि यहाँ से कैसे कम्यूट कर सकते हैं मुन्नार. तो थैंक यू विष्णु फॉर हेल्पिंग मी एट दैट मोमेंट, और I reached मुन्नार easily because of him. तो मुन्नार का हाईलाइट मेरे लिए थे बिबिन, जो कि वहाँ के लोकल हैं, and he helped me tour around the places, and I was so impressed by the kindness of people of Kerala. I think that was the best part of my South India trip. Learning कि काफी अच्छे लोग होते हैं दुनिया में, जो कि तुम्हारा सिर्फ एडवांटेज नहीं उठाते हैं, जो कि विदाउट एनी फेवर इन रिटर्न भी तुम्हारी हेल्प करते हैं. With an endless stretch of tea gardens and unparalleled green landscapes, Munnar also boasts of many dams, lakes and waterfalls. तो नेक्स्ट स्टॉप था मेरा कुर्वी लंगाड़, अ विलेज नियर कोट्यम, और यहाँ पे मैं वॉलंटियर कर रही थी एक स्कूल के साथ, पूर्णोदया विद्या निकेतन. तो यहाँ पे दिन में बच्चों के साथ टाइम चला जाता था और शाम में वॉलंटियर्स के साथ. तो जो अकेले घूमते घूमते जो थोड़ा सा स्ट्रेस बिल्ड हो रहा था, वो काम डाउन हो गया आफ्टर मीटिंग दीज लवली पीपल. उसी टाइम के दौरान हमने एक दिन का ट्रिप बनाया कोची में, एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय दिस आर्टिस्टिक सिटी एंड आल्सो द हिस्ट्री एसोसिएटेड विद इट. कोट्यम के बाद वापस से भागदौड़ शुरू हुई. अब मैं पहुंची एलिपी के बैक वाटर्स में. जब तुम केरला की बात करते हो, बैक वाटर्स तो तुम्हारे दिमाग में आते ही हैं. हाउस बोट्स जो तुम बचपन में देखते थे, वो सब देखा एलिपी में. एंड आई ऑल्सो हैड कंपनी, एलेक्स, जो कि मेरे साथ वॉलंटियर कर रहे थे पूर्णोदया में. वो मेरे साथ घूमे पूरा सिटी. एलिपी में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस प्लस बैक वाटर्स प्लस वर्ल्ड फेमस स्नेक बोट रेस का प्रैक्टिस प्लस बीचेस सबका टूर किया, और आई डोंट थिंक हमने कुछ भी छोड़ा होगा इस सिटी का. और एलिपी ही वो जगह है जहाँ पे मैंने अपना कैमरा पानी में गिरा दिया, और रेस्ट ऑफ द ट्रिप में मैं अपना कैमरा यूज़ नहीं कर पाई. माई कैमरा स्टिल डजंट वर्क. एलिपी में एलेक्स को बाय बाय करने के बाद मैं गई वारकला.
वर्कला इज मोस्ट नोन फॉर इस क्लिफ जहाँ पे टूरिस्ट सीजन में सब योगा, मेडिटेशन, पार्टीज सब कुछ उसी क्लिफ पे होता है। बट जिस टाइम पे मैं गई थी उस टाइम वो काफ़ी खाली था बिकॉज टूरिस्ट सीजन नहीं चल रहा था। This is what Varkala looks like during an off season. There is no one here. एक्चुअली बेस्ट पार्ट साउथ इंडिया ट्रिप का यही है कि टूरिस्ट सीजन नहीं था तो मुझे काफ़ी जगहें चीपर मिल गई और काफ़ी प्लेसेस खाली थे, इतने टूरिस्ट नहीं थे, विच आई एम ग्लैड। तो मेरा हिच हाइकिंग का सिलसिला शुरू हो गया था मुन्नार में एंड आई डिड नॉट शाई अवे फ्रॉम हिच हाइकिंग एनी मोर। बट वर्कला में एक गलत एक्सपीरियंस था कि मैंने एक आई थिंक आई हिच हाइक्ड विद अ पर्सन हु वाज़न्ट वेरी जेन्युइन। तो उसमें टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ आई जस्ट गॉट डाउन ऑन द वे एंड मतलब हैंडल किया उस सिचुएशन को कैसे तैसे। सो जस्ट बी केयरफुल व्हेन यू हिच हाइक विद समवन, लिसन टू योर gut feeling and observe the person you are hitchhiking with before you fall into any kind of trap. Apart from all of this, I also toured the lesser visited parts of Varkala, which was great. वर्कला तक आते आते मैं थोड़ा थक गई थी बट हिम्मत नहीं हारी और मैं पहुंची अपने नेक्स्ट स्टॉप पे कन्याकुमारी। मैं काफ़ी एक्साइटेड थी मेनलैंड इंडिया के सदर्न मोस्ट टिप पे आके। तो कन्याकुमारी जनरली पिलग्रिम्स ही घूमने आते हैं बट एज आई सेट ऑफ टू एक्सप्लोर द लेसर पिलग्रिमेज साइट्स ऑफ द सिटी आई वाज वेलकम्ड बाय वन ऑफ द बेस्ट व्यूज ऑफ द ब्राइट ब्लू ओशंस एंड द स्काईज। और कन्याकुमारी के बाद मैंने अपनी ओवरनाइट जर्नी शुरू करी टू रामेश्वरम और मैं रामेश्वरम पहुंची बहुत ही अर्ली आवर्स में जब अभी सनराइज भी नहीं हुआ था। रामेश्वरम पहुंच के I was amazed by the number of pilgrims that were visiting the city, and although I'm a lover of mythology, but I did not visit a lot of temples here. Nonetheless, I really loved the vibe of the place. रामेश्वरम में बाकी सब तो बहुत अच्छा था बट द मेन हाईलाइट फॉर मी वाज धनुषकोडी। एंड अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखो and you will know why I'm still so crazy about that place. A vast stretch of nothing but sand. I met so many beautiful people in रामेश्वरम जिनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा and I was just glad कि मैं आ गई यहाँ पे। कन्याकुमारी और रामेश्वरम में एक प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है, बैचलर्स को रूम नहीं दे रहे हैं वहाँ पे। जनरली बैचलर्स को रूम्स नहीं मिलते हैं, स्पेशली अगर आप एक फीमेल हैं जो अकेले घूम रहे हैं। सो प्री बुक योर होटल्स एंड जस्ट स्टे सेफ। पीपल माइट लुक एट यू एंड बी शॉक्ड कि तुम अकेले क्या कर रहे हो यहाँ पे, बट ओवरऑल यू शुड बी फाइन। तो विद दिस द होल साउथ इंडिया का फास्ट फॉरवर्ड कम्स इन एंड and I spent less than 10k in a month and a half of traveling on food, stay, commute, which is super awesome. How you can also plan a budget travel for yourself, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, so stay tuned. But before I end this video, I want to say thanks to so many people I mentioned throughout the video जिन्होंने मुझे हेल्प किया, जो लास्ट मोमेंट पे आए मुझे हेल्प करने के लिए। And also safety is a prime concern, especially if you're a woman traveling alone. So do take care of yourself when you're traveling alone. And जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि अपनी गट फीलिंग को सुनो, अपने सराउंडिंग्स को अच्छे से जज करो, डोंट जस्ट बिलीव एनीवन। अगर आपको ये सारा फास्ट फॉरवर्ड पसंद आया तो मेक श्योर टू हिट लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू really soon, hopefully really soon, in the next video. Until then, bye.